I had long hair. Wow, too much. Two baldies talking about long hair. Yeah, continue. And As a society, why are we fascinated with hair? I would say being bald brings you more confidence. So उसका swag बहुत अलग. But provided you accept it. Exactly. Yeah. But the day you accept it, boss, तुम्हारा कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता. वाली ये मौका क्या करेगा? I want to delve deeper into it. I had heard a nice joke. What's the difference between a bald man and an egg? An egg gets laid. All right, Babu, thank you so much for coming. This is the Detail Speaks. I talk about luxury, and you know about some of these things. At the same time, I discuss baldness as well, which is why again two bald people are sitting and discussing baldness and so on and so forth. But a quick introduction about Babu. So Babu is a very respected, top-notch director of photography in Bollywood. बाबू ने 17 फिल्में की हैं एंड सॉलिड रिस्पेक्ट है, बहुत जिंदा दिल फन आदमी है. एंड सो दैट्स बाबू. वेलकम टू. Thanks, Deepak. Thank you for having me. It's always nice to talk to fellow Baldy. Yes, fellow Baldy. Bald is beautiful, as they say. Yeah. Right. So, you know, Babu, I've talked about baldness to multiple other people as well, but you come from a very different background. मैंने फाउंडर से बात की है, मैंने कॉर्पोरेट जैसी जनता से बात की है. आप एक बहुत ही अलग इंडस्ट्री से आते हैं और उसमें मुझे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए. हाउ डिड यू गेट इनटू फिल्म मेकिंग? मतलब कैसे शुरू हुआ? देख, मेरी जर्नी ना एक्चुअली इट्स स्ट्रेट आउट ऑफ सिनेमा पैराडीसो, वेयर यू नो आई नो सो मेनी पीपल जो प्रोजेक्शन रूम में बैठ के फिल्म्स देखते थे एंड दे फेल इन लव विद सिनेमा. मेरी स्टोरी समथिंग सिमिलर है बिकॉज माय फादर वाज अ टीचर एट द Film and Television Institute of India, Pune. FTI, yeah. So I had access to the best of cinema since I was a baby. So my earliest memories are of sneaking to the main theater and watching classics, world cinema as a child and sitting with the students, you know, and hearing them discuss about films of Eisenstein, films of Ozu, films of Kurosawa, films of Fellini, and you name the masters. I didn't know about, I didn't even, register what they were saying. But I was so fascinated by what was happening on that big screen that it was mesmerizing, and I think my love affair with cinema started very subconsciously, I would say. So I knew then and there that this is what I want to do. I want to be part of that magic. What capacity, I had no idea. Of course, at 5 or 6 years old. All you care about is entertainment. लेकिन आपने एक्टिंग बहुत की है, entertainment. Yeah. So yeah, of course. And because we were part of the institute gang, so to speak, students always required actors. So we were the readily available actors. So I have acted in many playback exercises, many diplomas, many first year exercises, second year dialogue exercises. So my exposure in front of the camera was the first hands-on experience, I would say, of being part of the crew. But as an actor. लेकिन ये tell everybody who's listening to this कि कैसे decide किया कि DOP बनना है मेरे. Yeah, simple है. Till my 6th standard, because I had acted in so many etc. So I thought I knew acting. So I had this swag about going to National School of Drama Delhi and acting because I thought I knew acting. Right. Then I realized I'm horrible at it. But during the process of all the shootings, there was this one person behind the camera whom the entire crew would listen to. I said, boss, ये बनना है. बॉस बनने का है. बॉस बनने का. And उसमें ये था कि उसमें because
lot of them had long hair. हाँ, Long hair का fascination था. Solid. क्या बात है. Some of them were, Two baldies talking about long hair. Yeah, continue. and some of them were bald. वो भी fascination था because they were two extremes, right? हाँ. ये दोनों का एक अलग स्वैग होता था, लंबे बाल वाले का और पूरा गंजे का. तो ऑफ कोर्स अभी मेरे को नहीं पता था कि मैं भी शायद उस तरफ जाऊंगा और मजा आता था. तो वो लॉन्ग हेयर वाला फैसिनेशन भी मैंने पूरा किया. अच्छा. So when I was doing my masters in university, I had long hair. Wow. Too much. So I said correct है. हाँ छोटी छोटी बना ना एकदम ऐसा ऐसा पोनी टेल लगा के. तो I said ये correct है. हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ? Then The day I turned 34, हाँ. genetics kick in. अच्छा. the day exactly I still remember. Hello. 34 ऐसा हुआ साल. दूसरे दिन से मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है. वो I started. मेरा वो जो फेस वॉश था ना वो ज्यादा यूज होने लग गया. तो जल्दी खत्म हो रहा था. मैंने कहा कुछ गड़बड़ है भाई. Then I started realizing मेरा hairline recede हो रहा है. And within 6 months I was off. This was an amazing joke. ये face wash ज़्यादा use होने लगा. I'm sure people registered the joke. So I said, correct है. So that's when because it was a natural film, and I've seen my dad being bald, like forever. So for me it was saying कि हाँ ठीक है यार, दिया तो दे रहा, कुछ तो नहीं ले पाया मेरे बाबूजी का, यही ले लिया सही. So the only thing I took from my dad was the baldness. And I embraced it beautifully also because even as a child, I remember whenever we used to go to Tirupati, I would be the first in line to get my hair chopped off because I was fascinated by that. Ritual. Yeah. That not just ritual. I didn't care too much about the ritual. Just the fact that you could be clean shaven. You know. So I guess that always fascinated me, and this happened naturally. So I absolutely embraced it. This is so cool. भगवान ऊपर से देख रहे थे, ये लड़का हर बार आता है, इसको गंजा होने में अच्छा लगता है, इसको करो. 31 पर बाल ले लिया, अब उसको naturally कर दो, अच्छा लगता है. He's cleared his debts. तो बाबू, you have had this journey, ponytail, लंबे बाल. उस टाइम आपको लगता रहा होगा मैं तो इधर ही रहूँगा, लेकिन 34 पे आपकी जेनेटिक्स क्या knocked on the door, right? तो when the genetics knocked on the door और आपका फेस वॉश भी ज़्यादा यूज़ होने लगा, नेवर एंडिंग फेस होने लगा आपका, वो सब होने लगा, तो take us through that journey. कैसा था? शॉक लगा? Funny if you say that because for me it was such a beautiful transition. I actually started enjoying that baldness so much too that of course my hairline was receding, but I realized it wasn't suiting me, that receding hairline. You know, you had hair on both sides of the head and यहाँ पे थोड़ा अजीब सा patch है. I said बस ये जम ले रहा है कुछ. And then so what happened was in my second year of my film school, one of my batchmates was doing a film on Gandhi. अच्छा. Yeah. So where he was looking for an actor. Yeah. And I used to have a circular chashma. अच्छा. And I used to sport only a moustache. अच्छा. And fortunately or unfortunately or whatever, I looked exactly like Gandhi. So he said कि यार तू करेगा? I said of course करेगा. But यार ना हेयर शेव करना पड़ेगा. मैंने कहा क्या बोल रहा है? Yes. मैंने कहा yes sure. Yeah. So I went, उसी दिन जाके ऐसा complete शेव करके आया मैं. And I was Gandhi and I played Gandhi. तब से then I said कि ये correct है ना, ये मेरा जोन है. हाँ, गांधी बन नहीं पाए, गांधी तरह दिख तो सकता है टाइम में. So then from that day onwards I started sort of sporting a bald look more often than not, right? That's so cool. तो मैं honestly speaking मैंने और लोगों से भी बात की है, तो थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है, स्ट्रगल होता है बीच में. जैसे मेरे लिए तो थोड़ा स्ट्रगल का मोमेंट, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि MBA के टाइम में ही बाल गिरने शुरू हो गए. डेली उठता था मैं तो इतना बड़ा जैसे women have long hair, तो उसमें जब वो उनके बाल वो टूटते तो हैं एक नेचुरल प्रोसेस, तो वो गुच्छा बन जाता है. तो मेरा बाल का गुच्छा बनता था, इतना बड़ा बाल, इतना सारा बाल गिरने लगा. तो that चीज़ टू हैपन. और उसके बाद जब मैं इधर बॉम्बे आ गया, आई स्टार्टेड वर्किंग. वहाँ डॉक्टर ने बोला कि देख भाई, ये इरिवर्सिबल कंडीशन है, ठीक है, हम इसको स्लो करेंगे.
मैंने कहा अच्छा स्लो कर देगा, चल कब तक, तो इधर 10 साल तेरा ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा 10 साल तक मैं ऐसा दिखेगा बालों के साथ। लेकिन उसमें 25-30 तो रेस्ट्रिक्शन, ये नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा। उनका भाई तुम वो डिले करने के लिए इतना सारा रेस्ट्रिक्शन माफ़ कर, ऊपर से इतना एक्सपेंसिव। एंड आई वॉज कमिंग फ्रॉम गोरखपुर, तो भाई 2,500-3,000 रुपये पर महीना वॉज नॉट गोइंग विद मी। तो यू नो आई ड्रॉप्ड इट, यू नो, सो दैट वॉज द ट्रिगर राइट, बट इट वॉज नॉट वेरी स्मूथ फॉर मी, ऐसे कोई बहुत। लेकिन धीरे धीरे करके फिर उससे यू नो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज started using this as a tool in my repertoire to inject confidence in myself. वो एक self talk थोड़ा सा बदल गया. I started doing a very different kind of self talk, and honestly I was not a very confident person, you know, earlier, but you know I evolved in a certain direction. और वो direction में मुझे लगता है baldness का एक रोल था. ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ. बॉल्डनेस ने मुझे इस तरीके से प्रेप किया, और मैंने कब उससे डील करने के लिए आई हैड टू बिकम कॉन्फिडेंस। राइट। ये एक यू नो आई डोंट नो दैट दिस वाज अ प्ले इन माय माइंड, और उसकी वजह से एक सर्टेन एवोल्यूशन हुआ। तो दैट वाज माय जर्नी ऑफ एक्सेप्टिंग बॉल्डनेस। लेकिन आपका ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यार चिल, मतलब पहले से तिरुपति में प्रिपेयर हो रहे हैं, फिर वो यू नो द वे इट वाज स्क्रिप्ट रिटन कि वो आएगा। Also, in all fairness, I come from an industry where we are slightly blessed, you know. The more atrangi you look, the better you are. अच्छा। Yeah, either you have a long hair, or you are graying, salt and pepper, or you're bald. तो normal black hair और चिकना Ah, hair, then you're just part of anybody, right? But these 3 traits, if you have, you are somebody. हाँ, People accept it that you are an artist. artist. So these are those unsaid, so to speak, Artist archetype, Yeah, or whatever, yeah, you know, yeah. how they should look, or they Absolutely. can So then look. you can keep quoting. Picasso टकला था यार, I mean, come on. You know, तो I mean, Picasso टकलाता, and he was quite a you know ladies man. absolutely, yeah. So like I said, bald is beautiful. Uh, One of those. So I guess arts in general are more forgiving, I would say, more accepting. right. So वहाँ पे कोई ये नहीं होता है कि तुम ऐसे दिखते हो, ये है, ऐसा कोई restrictions नहीं है. As long as you are presentable and nice in whatever way you are, even if you're wearing rags, there has to be style to it. You know, like now you are seeing a trend of fata hua jeans. वो हमारी मजबूरी थी जब हम पहनते थे. You know, so it's that. But that swag became a trend now. Correct. वो हम लोग पहले कर चुके हैं मजबूरी में. so it's that. So like baldness, how our industry accepted baldness, अब जाके I think It's becoming a more universal truth, I would say. दादा यू सेइंग कि आपकी इंडस्ट्री और क्रिएटिव फील्ड में बॉल्डनेस या एक सर्टेन डिफरेंट लुक को मतलब उस बिकॉज पीपल स्टैंड आउट और उसको एक्सेप्ट किया था, अरे यार ये कूल है, वो एक सर्टेन प्रॉब्ली पीपल एसोसिएट सर्टेन क्वालिटीज, डेप्थ ऑफ क्रिएटिविटी इन दोज पीपल. तो क्या ये कैमरे के पीछे और वही होता है या कैमरे के सामने भी एक्सेप्ट किया जाता है? क्योंकि आई टेल यू वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, कि जिसे आपने पूरी वर्ल्ड सिनेमा देख रही है, तो अगर आप देखो आज की डेट में भी बहुत सारे टॉप एक्टर्स, भाई अपना रॉक जो है ना, ही इज यू नो रॉक, जेसन स्टेथम, ब्रूस विलिस, तुम्हारा विन डीजल एंड मेनी मोर. सो यू नो ये सारे लोग, एंड दे यू नो रॉक तो सबसे ज़्यादा पैसा पीटता है, राइट? वेस्ट में तो बहुत इजीली इस कैमरे के सामने भी बड़े एक्टर्स आकर के दे विल शो भाई आई एम बॉल्ड एंड आई एम अ सर्टेन वे. तो क्या ये इंडिया में भी यू नो आपने देखा है कि ऐसा? मैं तो नहीं देखा कि नहीं, अपने देश में गंजा in front of camera has always been a villain. हाँ, always, or कैरिकेचरिस्ट or a caricature, or a very extremely funny guy, or a बेचारा काम के बोझ का मारा. You know? correct. So it's that. So we were always limited to portraying These trends in a bad light. So hero अच्छा होना चाहिए, अच्छे बाल होने चाहिए, you know, सुडौल, सटीक, fair, and anything विकृत would be a bald, dark, short, stout, fat, etc., all the superlatives. So Amrish Puri was a villain.
In Shan, Kulbhushan Kharbanda, a young man, he was asked to shave off his head. I would say the only actor who embraced baldness with grace is Rajnikant. Like when he's not acting, he's bald. But when he's on screen, he always puts on a wig. Why? Because people cannot accept Rajnikant as a. Yeah. The only time they did accept him was in a film called Shivaji, where he played a double role. Acha. And in the double role, the second role he comes back as a baldy. Acha. And he would do this. And that became a trend. Right, yes. In fact, thanks to him, probably baldness became slightly more, I would say, normal. Normal, yeah. Yeah. And the way he embraces baldness is amazing. Yeah, I know. In all his interviews, he's not bothered. I mean, that's his true self, and he presents it as that. So, see, I mean, if you were to give it a philosophical twist, I would say, I think being bald is being more honest, yeah. I know. तुम्हारा कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता. बाल ही नहीं है. दादा एक बात बताओ मेरे को. So कई बार जैसे I used to go and walk. वहाँ पर उसे बाइकर्स बहुत सारे आते हैं, मत वाले रूड बाइकर्स. तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं चल रहा हूँ अपना हेडफोन लगा करके और नॉइस कैंसिलेशन इज फुल ऑन, लेकिन बीच में थोड़ा सा आवाज़ आएगी, ए टकले, जोर से बोल के जा रहे हैं, उनको बड़ा मज़ा आ रहा है. लेकिन उनका मज़ा मेरे ख्याल से कम हो जाएगा when they realize और देखेंगे कि I'm least bothered even in reacting. पर उस समय टकले ना ठीक है, fine whatever यार, have fun. मतलब have you ever faced things like that? Yeah. See, I won't say of course yours is a typical reaction. Like as a child, even I've done that. I mean, in all fairness, like when we were growing up and when we would see anybody, we would say, hey, uncle. Of course, we've done that. I mean, come on, who hasn't, right? But I'll tell you one very funny incident. What had happened was I was shooting this film called Wrong Side Raju. It's a Gujarati film. We were shooting in Ahmedabad, and we were shooting in one of those poles. Right. In a house. Now in poles, the typical house, how the houses I would say is, they are layers. There are about 4 to 5 stories, and there is a courtyard in between. So, and all the houses have a common balcony. So if you look down, you can see the courtyard. And more often than not, there will be either a jhula or one of those things kept for everybody to use. So in the middle of lighting one situation, I was generally chilling on the jhula, आराम से सुख चल रहा है मेरा, and I was instructing, अरे ये कर वो कर. And in the conversation, I just happened to look up and I saw some children playing over there, and I ignored. And then I went back to my work. After I would say 5 minutes later, a stone fell on my head. It broke my skull. I was bleeding. And my director freaked out, my producer freaked out, everybody freaked out. And I was pretty calm. I was like, take care, So, and I'm sure what must have gone in their head, saying कि अबे ये कुछ तो चमक रहा है टकला, कौन इसके सर पे मारेगा उसको एक टॉफी. I'm sure आपस में कुछ तो बेट हुआ होगा. एक ने मारा लगा. उसके बाद में I looked up, गायब. So it's that, yeah. I mean, why? It's such a tempting thing. It's a tempting thing, yeah. One nice shiny head is bobbing नीचे. Who wouldn't try to hit it? Attractive target. Yes, Yeah. absolutely. Very interesting story. So Dada, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, people who are in their 50s and 40s and जिनके बाल obviously जा चुके हैं. तो typical male baldness pattern कैसा है कि आपके यहाँ से the main जो crown है, from the top and this side. Yeah. Correct. साइड से यहाँ से होता है, फिर crown जाता है, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ के ये पूरा जो आपका main पूरा जो scalp है, उससे बाल वो ग्रोथ एकदम कम हो जाती है. बाल तो रहते हैं बट वो दिखते नहीं है, और फिर इधर छतरी आ जाती है. बहुत सारे लोग छतरी रखते हैं और छतरी उनकी रहती है, फिर वो विग लग जाता है. ये बहुत कॉमन है. लोग जाते हैं टर्की आजकल, people spend money on hair weaving etc. So I'm like कि good, अच्छी बात है, आप करिए, बहुत अच्छा है.
और I've been reading and I've been doing a lot of research. इसमें काफी मतलब there's enough commitment needed. And it's a multi-billion dollar industry. आप मेरे को क्या बोल रहे थे, आप उसके बारे में बात करो कि मतलब आपको लगता है कि somebody comes with the solution for that. Yeah, see, I have always believed in the day somebody invents or discovers a medicine process, a procedure or whatever can make your hair grow back or retain it, or and naturally without any side effects or whatever, that person will be a billionaire overnight. True. Because I would say baldness, it's a natural and a universal phenomena. Few people go bald very early in life, and at a later stage baldness is but natural once you hit 50s and all. So that is bound to happen. So if somebody can figure out a way to stop that phenomena naturally, do. Yeah, I think that's one next revolution to happen. Yeah, they're going to be waiting to happen. Unstoppable. Absolutely. Coming to our अपना culturally, जैसे हम लोग फिल्म में बात कर रहे थे कि why are we as a society, why are we fascinated with hair? Natural चीज़ है. देखो कैसा है दादा, इंडिया में most of the men they don't bother about their paunch तो आनी ही है. वो उसको कैसे एसोसिएट कर दिया कि खाते पीते घर के लगते हो आप, तो पहुँच तो आ रही है आपकी. बॉल्डनेस वो एज के साथ वो उधर फैट एक्यूमुलेट होता है, तो एज के साथ बाल भी कम होते हैं, लेकिन आप वो चीज़ सोसाइटी वहाँ क्यों नहीं लगाती है? उसका ना देख, उसके ना फिर मल्टीपल लेयर्स. हाँ, अगर आप बात करें हिस्टोरिकली, आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ लाल बहादुर शास्त्री. हाँ, व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप, आई रेड वन स्टोरी, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट. वन फाइन डे एज अ चाइल्ड apparently he went to school, उन्होंने सर मुंडवा लिया, और एंड सर मुंडवाना अपने कल्चर में तरह से वो भी देखा जाता है कि किसी की देहांत हो गया है, किसी का देहांत हुआ है एक्सेट्रा, या फिर certain class of people had to be bald. तो वर्ण व्यवस्था की बात करें तो अपनी सोसाइटल नॉर्म्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा व्हाटएवर. सो जब लाल बहादुर शास्त्री गए पूरा सर मुंडवा के, सारे बच्चों ने उसकी बहुत खिल्ली उड़ाई, मारा पीटा, मजाक, पूरा दिन मजाक उड़ा रहे थे. टीचर आउट ऑफ कंसर्न उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ, कोई गुजर गया, कुछ हुआ, क्यों आपने बाल क्यों मुंडवाए? तो उन्होंने कहा कि सर मैंने बाल इसलिए मुंडवाए कि मुझे तेल ना लगाना पड़े, बिकॉज वी कांट अफोर्ड ऑयल, हेयर ऑयल. Now that's one angle to it. So here is a guy who of course became an amazing leader later in his life, but look at the thought process of that child, because he understood poverty, he understood his family's limitations, he embraced it. Now that is greatness. Yeah, now that is one side of it. And then why people don't accept baldness in society at large is because hair, बाल जो है एक वस्त्र, आभूषण ही है वो, करेक्ट? जिस तरह आप आपके कान गुदवाते हो, नाक गुदवाते हो, आप हेयर को उसी तरीके से तराशते. यू डू लॉट ऑफ डिफरेंट स्टाइलिंग ऑफ हेयर कट. विमेन 2 चोटियां बांधेंगी या सिंगल चोटी, उसमें फ्रेंच प्लैट, उसमें ये ना वो. मैन उसको या तो क्रू कट करेंगे या फिर आजकल जो फुटबॉलर्स का जो नेमार का ट्रेंड है, यहाँ से पूरा क्रू कट, बट यहाँ से बाल लंबे. यू स्टार्ट कलरिंग योर हेयर. सो हेयर एक आभूषण है, एक आपकी एक आइडेंटिटी. दैट्स व्हाई पीपल आर वेरी टची अबाउट हेयर, and they're very and more so people in front of camera, at least in my industry, because hair sort of completes them. It reiterates the image of a hero or a heroine in people's minds. आप बचपन से जो अमर चित्र कथा पढ़ते आए हो, आपने किसी भी हीरो को गंजान नहीं दे. तो यही वही बात है कि अगर हीरो है, क्योंकि हीरो इज लार्जर देन लाइफ, आइडियल, तो आइडियलिस्टिक जो उसमें है, उसमें कि भाई वो परफेक्ट इंसान है, ये संपूर्ण है, तो उसके सर, उसका ये सर खोपड़ी पे बाल भी है, ये भी उसका गुण ही है, भगवान ने दिया हुआ है. बिकॉज आई थिंक हम हीरो देखना चाहते हैं, हम शायद कैरेक्टर या एक्टर नहीं देखना चाहते. अब देख, सिंपल है, वेस्टर्न कल्चर में सुपरमैन का एक बाल, इट कैन एज पर द कॉमिक लॉर कैन होल्ड अप टू 1000 LPS का वेट, सिंगल बाल. सुपरमैन टकला नहीं. बट
उसका जो alter ego है Lex Luthor, Lex Luthor, yeah. वो टकला है. वो टकला है. You see the dichotomy here? Yeah. So it's like cross culture. Mm. तो अपने में भी वही है. भगवान इधर है, विलन इधर है. और विलन गंजा है. Yes. और काला गंदा आदमी ही होगा वो. No, this is very interesting to dissect it like this and understand कि भाई लोगों को सच में क्यों पसंद आते हैं. तो दादा एक बात बताओ, इन रियलिटी अब अपन दोनों तो गंजे हैं, ओके? You got a beautiful loving wife. I got a beautiful loving wife. You know, my wife knew that मैं तो आधा गंजा था ही जब मैं उससे पहली बार मिला. तो मतलब यहाँ पर ये कैसे प्ले आउट हो रहा है? So corporate साइड पे जहाँ से मैं आ रहा हूँ, मैंने बहुत सारे कम देखे हैं, लेकिन देखे हैं, एंड दे आर सुप्रीमली सक्सेसफुल. और सामने एक्स्ट्रा फिट भी होते हैं, ऐसा फाइट मारते हैं एकदम लाइक सुपर स्लेक्स. वो लेक्स लूथर के बाप होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छे वाले होते हैं, रियल लेक्स लूथर नहीं होते. तो एंड देन दे हैव गुड लुकिंग पार्टनर्स एटसेट्रा. ये कैसे प्ले आउट होता है? Again, going philosophically, being bald bears you, right? आपकी असलियत सामने है. So if you are a baldy, you're the nicest person anybody will know you. You cannot lie. You cannot manipulate. Unlike the baldies in films. So I guess that's what draws your partners towards you. Because you are bare. You're bare. And you're confident. I guess confident है, अपना गंजी को तू embrace करता है. Absolutely. You know, and you stay the way you are, confident रहता है. तो I think that becomes an interesting. Yeah, and you're more into fitness. Point of attraction. Yes. Yeah, because see, you have to balance your baldness. Either you'll have a nicely groomed beard, or you'll make sure that you're into fitness. If not gymming, you'll do either running or swimming. Yoga 5 बजे उठ के. Absolutely. So it's a beautiful. Okay, so if you were talking about morphology, a bald person looks better overall. I want to delve deeper into it. Take any yogasana, be it Tadasana or the Virabhadrasana, or even Shirshasana for that matter. There is this complete harmony of the body when a bald person is doing it vis-a-vis a person with hair. अच्छा, तो bald person में बोल रहे हो आप complete harmony होती है. You know, like somehow there is a weird symmetry to the body. You know, वो जो अर्धनारीश्वर जो concept, वो correct है उसमें पता चलता है. And there is this perfect alignment in the physicality of the being, so to speak. Similarly, even while you're swimming, you don't have to bother about aerodynamics because hydrodynamics, because you are cutting through the water naturally. ना आपकी ये सब बातें सुन के तो मैं बता रहा हूँ, मैं दोस्तों के नाम नहीं लूँगा, तो कहेंगे यार अपनी बीवी डिस्कस करेंगे, यार फालतू में मैं ये खर्च कर रहा हूँ, बहुत सारा पोटेंशियल है, मुझे लगता है वो जाना चाहिए. एंड they tear off their tope and throw it. उनकी बीवियाँ बोलेगी, Isn't it too late to start swimming now? No, this is but then I'll tell you, see ना बहुत फर्क है. Like I know so many people who married, their partners encourage them to go through either hair weaving, Yeah. or they take medicines to stop balding through the process. But in that process, I've also seen their health getting affected. Because at the end of the day, it is an artificially induced stimuli. Exactly. So it's definitely going to help to affect something or this. ये दादा मैं आपको बताता हूँ. सो यू नो जो मैं बता रहा था ना कि जब ये एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ, रिस्टफील गए यहाँ गए, बीच में किसी ने बोला अरे ये लगा लो, मिनॉक्सिडिल लगा लो, कुछ तो आता था. और यू नो लगाने के बाद ना वो थोड़ा सा आपको दिखता है कि थोड़ी सी ग्रोथ होती है, हल्की सी होगी ग्रोथ, एंड देन इट डाइज ऑफ अगेन. इट्स नॉट फॉर एवर. ऐसा नहीं होता वो, यू नो इट कैचेस अप अगेन. Your genetics catch up. True. It's as And also simple as that. scientifically speaking, correct me if I'm wrong, Hair is a dead cell. तो क्या ग्रो क्या करा तू? है ना? Yeah. Except the root. Yeah, exactly. The follicle, hair as a concept is a dead cell. Yeah.
So I mean, what are you fighting? I know. No, it's very interesting. I think वो aesthetics और उसके साथ बहुत closely associated, and that's why a lot of people want to kind of grow it back or hold on to it, of course. But I think, you know, in many other aspects of life, हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा acceptance पे बात करते हैं ना, accept it's fine. लेकिन यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा aesthetics और एस्थेटिक से इसको रिलेट किया जाता है, इसलिए शायद लोगों को या तो उनका सोसाइटी वो या वो खुद जो भी है इनसिक्योरिटी, उसकी वजह से लोग जाते हैं, विच इज़ फाइन, एब्सोल्युटली ओके, सोल्यूशन अवेलेबल तो बिल्कुल करिए. बट एट द सेम टाइम मतलब आई थिंक हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें ये भी दिख रहा है कि गंजे होने एक्सेप्टेंस के बाद यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड आउट वेरी इजीली. You'll naturally shine. You naturally shine, you reflect a lot of light. मिरर है आप. The mirror to the society. सोसाइटी. और वो बिकॉज यू स्टैंड आउट, और अगर उसमें आपने बॉल्डनेस के साथ एक कॉन्फिडेंस को ब्लेंड कर दिया, मुझे लगता है बहुत ही पोटेंट कॉम्बिनेशन बन जाता है. In fact, I would go on further. I would say being bald brings you more confidence because उसका swag बहुत अलग है. But provided you accept it. Exactly. Yeah, the day you accept it, boss, you'll change. You will change because you will know you're gonna walk into that room or that. दादा इसमें थोड़ा सा डेल्व करते हैं ना, जो आप कह रहे हो ना कि the day you accept you will change और उसका swag अलग है, इस पे थोड़ा सा डेल्व करते हैं. Let's get delve deeper. It's practically, I think it stems from the fact that you have nothing to lose. आपको कॉन्फिडेंस कब आता है? Either you are so sure of your craft or your pitch or whatever, उसका ही कॉन्फिडेंस आता है. दूसरा, when you know you have nothing to lose. True. These are only two factors which give you confidence. Correct. So what is stopping you? Now if you know that my genetics are such that I am losing hair, so then I might as well lose whatever is left of it and embrace it, and then go with confidence about that, because then you don't have to think about it, because there's nothing to think about. Correct. So then why bother? Right? Then work on something else. No, work on your body, work on your physique, work on your language, work on your demeanor. A simple handshake changes everything, no? और अगर मैं आपकी इंडस्ट्री में जैसे शाकाल का एग्जांपल लिया था, शाकाल पर्सनालिटी दिखाई थी तो वो तो थी माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर दिखा रहा था फिल्म में आपका. अच्छा, लेकिन अगर उसी कैरेक्टर में मैं पॉजिटिव क्वालिटीज दिखा दूँ और सुपर कॉन्फिडेंस वही था, तो वो एक मतलब एक्स्ट्रा पोटेंट डेंजरस कॉम्बिनेशन, पॉजिटिवली डेंजरस कॉम्बिनेशन नहीं बन जाएगा वो शाकाल? Absolutely. Isn't it? Yes. खतरनाक लगेगा आवाज उसकी ऐसी आप दिखा रहे हो. और या फिर सिंपल है, मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो खुश हुआ. हाँ, बस दहशत है यार, दहशत है ना. भाई ने बोल दिया मोगैम्बो खुश हुआ, खत्म. या तो that also contributed to people saying कि वो गंजा है तो विलन है. हाँ. So now these are all iconography examples. हाँ, तो कॉन्फिडेंट, हाँ, तो वही मोगैम्बो को मैं कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी इसमें डाल दूँ तो मतलब वो अलग ही दिशा में वो आदमी शाइन करेगा ना सर. Absolutely. Which is why I am coming to Rajnikant Shivaji. तो मतलब बॉटम लाइन फिर ये है कि गंजा शाइन करेगा. Yeah. चीज, हाँ, but literally and figuratively both. और इनफैक्ट मेरे सेट पे तो और भी मजा आता है because my team always, we have this as cinematographers, because we like faces. In Natya Shastra there is a line which says Sarvani Andani Mukha Pradhanam Tatmat Chakshu. In the entire body, your face is the most important, and in that too, the eyes. Okay. So now what we do as cinematographers is we are always trying to bring life in the eyes. So if you notice my eyes, you see that shine, twinkle, this is this light. Correct. Even you have the same light. Now always we are trying to catch that light in the actor's eyes, which is what makes them alive. Hence it's called the catch light as well. अच्छा. So now there are various ways to do it. Either we put a small light near the camera or we use a big light like this. So
then sometimes I don't have that leeway. My team always teases me saying कि सर मतलब आपका सर है ना. ये सर वो लाइट है आपके सर से लग के उसके आंख में जाएगा दिख जाएगा. So yeah, that's one advantage I would say in my profession. Among many other advantages, like a very very functional advantage, and I'm sure people will value it. तो आप ये बताओ कि you have worked with so many celebrities and you also know कि उसमें तो बहुत सारे गंजे तो होंगे ही. तो without taking names मुझे बताओ एक अच्छा anecdote किसी celebrity के साथ, something around baldness, कुछ भी, something interesting, ताकि जनता जो सुन रही है उसको लगे यार ठीक है अपन भी लगा लेंगे, वो that's okay, but it's cool. In front of the camera, unfortunately, like we just talked about how the image of a hero or a heroine matters. So they will never embrace baldness the way people behind the camera. Correct. Yeah. Behind the camera वालों को swag है. In front of the camera उनका swag अलग होता है. But उसमें these anecdotes keep happening with me. Like lot of actors will come, they'll first look at me, but immediately when they see me bald, I have seen their faces change, saying कि but change not for the funny side of it, but for respect. Saying कि इसको काम आता है. काम आता है, all right. हाँ, मैंने वो कहता है कि इसने धूप में बाल सफेद. इसने धूप में गायब नहीं किया. इसने धूप में बाल गायब किए. मतलब इसको सब आता है, तो इससे पंगा नहीं ले. So that has been more often than not. And of course, once you get senior actors, they to go all out because they have worked with a plethora of people, right? Different kinds of people. So उसमें मेरे ऐसे भी काफी लोग हैं. There are a lot of bald cinematographers who just appeared. So a lot of people like Mr. Bachchan has commented many times saying कि hey ये trend है. लाइटिंग अच्छी होती है. So it's fun. It's a good banter. Yeah, it's a good banter, conversation starter, and obviously you get a lot of attention. You reflect a lot of light and all of that. तो दादा आप जनता जो सुन रही है, एक उनके लिए कोई मैसेज दो आप कि हम ये प्रोफेस नहीं करते हैं, आपको जो अच्छा लगता है करो, बाल उगाने उगाओ, जितना फर्टिलाइजर डालना है डालो, कोई टेंशन नहीं है. हम ये लेकिन बोलेंगे कि बोले फालतू की दवाइयाँ अपने अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कर सकते हो तो करो. उसके अलावा और कोई एक दो रीजंस जो बोलोगे वो ट्राई करके देख सकते हो. एक मैसेज कि अगर आपको ट्राई करने का मन है एंड यू बीन सिटिंग ऑन द फेंस, आप कह रहे हो कि नहीं यार मैं टोपी लगाता हूँ, पैच लगाता हूँ, चिपकाते हैं, इट्स ब्लडी इरिटेटिंग मैन, आई नो इट मैन, इट लुक्स स्ट्रेंज. यहाँ से दिख रहा होता है कि अलग लेयर है, भाई सब दिख रहा है. कल मैं लिफ्ट में जा रहा था, एक साहब जा रहे थे, उतरे, गार्ड ने उनको सलाम किया, मेरे आगे आगे चल रहे थे और वो अपने बाल में बार ऐसे ऐसे करते हुए जा रहे थे. तुरंत दिख गया कि भैया सर आपने ये विग लगाया हुआ है एंड लुक्स, आई एम सॉरी बट इट लुक अगली डिटेस्टेबल. सॉरी, यहाँ पर एक अजीब सा ये होता है कि इतने बाल और अजीब से, मतलब वो प्लास्टिक की बाल होते थे, स्टिक आउट कर रहे होते हैं. People don't want to fight. You are not comfortable with your baldness. You want a wig? By all means, go ahead with it. But make sure you get the best of it, and the best of it are very expensive. Because then they use real hair, and not just real hair. They will try out your face. They will recommend a color of the hair. They're that precise, and they're actually seamless. Some extremely good wigs. A lot of actors wear those. Can't make out. You can't make out. Just can't make out. But they are supremely expensive. So then either do that or they don't do that. Don't do it. Because you are making yourself look like a fool. I'd rather that you embrace your baldness with confidence. मजाक करना है यार, क्या किसको इम्प्रेस कर रहा है, क्यों इम्प्रेस कर रहा है. और अगर शादीशुदा है तो अब तो कोई टेंशन भी नहीं है यार. Unless you are going to Thailand, उधर भी टेंशन नहीं है. Look, at the end of the day, nobody gives a damn. Yeah. The person who should give a damn is only you. True. So how you embrace yourself, your body,
That is the game changer. The day you start accepting कि boss यही है, you will see a new person. And it's nothing got to do with baldness or hairness or whatever you may call it. It is just a conduit. It is just a conduit to drive that feeling in you. Absolutely. I'm saying, boss, you be you ना. क्यों दूसरा थोड़ी ना तेरे को आके खाना खिलाएगा whatever यार. He's not here. The society is not going to follow you. Yeah. They won't give a damn after you are gone. Within 2 days they'll forget you. Yeah. That's the unfortunate truth. So then who are you trying to impress? Impress yourself, no? So I mean, embrace it. Amazing. I think, Babu, what I really wanted to discuss, it has come out in a very nice conversational style, and I really love it because I definitely had a lot of fun discussing this with you, and I know that you had fun as well because of the guffaws of laughter that I saw, and I think आप conclude करो कोई एक लाइन में अच्छी लाइन दो हमें जनता को सुनने के लिए. Just a couple of years back, I had heard a nice joke. What's the difference between a bald man and an egg? An egg gets laid. ये कह के ना no, but having said that, ये कह के आप लोगों को डरा दोगे. इतना सारा ज्ञान दिया मेरे. I don't get laid. Let me just get my hair back. Whatever. no, but then yeah, hair doesn't ensure that also. Please, we are Indians. we are pretty unlucky there. But I think on the fun side, I think bald men are far sexier. Definitely. Yeah. I'm sure many people will agree that. Many people agree, and these women also agree. Women also agree with that. A lot of women find tall, dark, bald as very sexy. अगर उसमें आप थोड़ा सा तड़का लगा दो fitness का, you are no, fitness is a must. You are unparalleled. Then. Fitness is a must in that. Yeah. Because that is what balances your body. See, the whole idea of why we do what we do to our body is to create a balance. Correct. Yeah. Yeah. So our clothes are a distraction, our jewelry is a distraction, our hair is a distraction. If you don't have the hair, you have to balance it out somewhere. Idea is to present yourself correctly. Just because you're going bald and say, screw it, I'm going to accept it, it doesn't stop there. You can't have a pot belly and just walk. That doesn't make you unattractive, but that doesn't make you attractive. There's a difference. It doesn't help you. Yeah, it doesn't help you. And then the egg will surely get laid. You have to work on your personality. You have to work on your body, Be fit. Yeah, no, absolutely. No, this is good. I think people will definitely derive one or two things from this conversation, and I hope we have given them reasons to laugh as well. अगर कुछ नहीं भी करना है तो at least you know that people had a good time listening to no, us man, laugh it talk out, about yeah, dude. Don't take life too seriously. Yeah, don't take life yourself too seriously. Don't take yourself and don't take your borders too seriously. Absolutely, it's part of who you are. Just टर्की की ट्रिप कैपेडोकिया और सब घूमने के लिए बना ले. Correct. और अगर वीमी भी कराया रहा तो एक वीक एक्सटेंड कर भाई. Turkey is such a strange place, yeah. That's one country where I've seen every airport. You'll see only bald people who come for hair weaving, and most of them have already. You can see those the hair weaving patterns, right? And after you've done it, you have to keep it open for a week or so. So in that entire airport, I would say about 80% of the people have come for hair weaving there. चलो अच्छा है, धंधा चल रहा है. Yeah, good for them. That's what I'm saying. It's a $1 billion industry, multi-billion-dollar industry. Yeah. I'm just waiting for somebody to come with a product which will, change the game, yeah. Yeah, change the game. उस time आप कर लीजिएगा, लेकिन तब तक just embrace. Just embrace. And enjoy. Super. This is amazing. बहुत मजा आया बाबू. और hopefully we will get to talk about these things in the future as well. Yeah. But until then, thank you. Awesome. Thank you very much. Thank you.